There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Hi everyone, welcome to another travel vlog. So I am in Kantalur. If you don't know, small part of a Munnar. I would say 40 km from Munnar. So yeah, it's my first time in Munnar and I just came from a long bus trip from Bangalore and then I landed up to Munnar. From there I took an auto and I am in this beautiful property of Airbnb. I'm just sitting here, just chilling, nothing. I'm just vibing with the vibe. Nothing else. My full face is so swollen because I was not fully asleep in the bus. And yeah, I am here and the environment and everything is so good. इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे because I love it and so much peace is there. So yeah, I just checked in inside the room. The weather is so good. It's like a very good temperature compared to Bangalore and I am just loving this because इतनी ज़्यादा शांति है. मुझे ये शांति चाहिए थी and I am super happy. So yeah, it's like I have checked in and everything is so good. The room is so good. Let me quickly show you a room tour and all of the detail regarding the rooms and everything will be there in the description box. So you should definitely check out. एंड या मैं बहुत आराम से आ गई. द ओनली प्रॉब्लम इज आई वांटेड टू गेट अ स्कूटी इन मुन्नार जो वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड. देयर वाज नो स्टॉक सो आई टुक अ ऑटो एंड इट वाज वे एक्सपेंसिव. दे टुक अराउंड 2000 rupees. But yeah, that's what. And yes, so I am in Kantalur, so I have a lot of plans. So आज तो मैं relax करूँगी because long travel करके आई हूँ. I wanted to just relax, chill. So मैं आई हूँ total 3.5 days के लिए almost. So आज तो first day है, आज Thursday है. So I'm just sitting, relaxing, having the vibe का पूरा. I'm just enjoying the vibe. Tomorrow I am planning कि मैं कहीं पे जाऊँ, like कहीं घूमने के लिए. आसपास में there are waterfalls and if you don't know, Kantalur को fruit basket of Kerala बोलते हैं because there are a lot of fruits like peaches, oranges, strawberries. ये बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे. Hopefully I can get an option to go. Since I don't have a scooty, that's a bummer. I need to think about कैसे मैं manage करके जा पाऊँगी. But there is some nearby waterfall which definitely I am going. तो चलो मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ और फिर मैं शार लूँगी एंड उसके बाद मैं घर पे मतलब मैं यहीं एयरबीएनबी में रहने वाली हूँ. आई एम प्लानिंग टू ईट समथिंग लाइक some Maggie or something, or raat mein they are preparing dinner, so I'll have that. I'm just chilling today, nothing, and that's what solo travel is all about, you guys. You need to keep your travel very peace, very calm. So guys, that's a kitchen area, and once you enter this property, like this is a tree house which is basically very beautiful. So once you come to this balcony, you have all this sitting arrangement, and there are a lot of other properties as well, and it's like a full length balcony. And then once you enter here, this is my room and just look at this, kitna sundar hai. It's like a mud tree house and like full aesthetic vibing. Abhi baj raha hai 10 and then everything is here, like all these basic necessities they have given, like glass, mineral water and everything. And then yeah, this is a bed situation and obviously that's a cupboard. And let me quickly show the washroom. This is a washroom and here I am, and they have like a very good washroom. Let me show you. Even the washroom situation is so clean, you can see, like they have geyser option which is also very good. So yeah, and that's a very quick room tour. That's it, and it's so good property. Let me show you some other option as well. Like when I came here, I can see this is like a volleyball area and they have some Ludo options area as well. But yes, this is how the overall property looks like and so good. If I show you from here, you see the views. Just see, so beautiful man. Clouds भी आ रखे हैं और ये सारा चीज़ इतना अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा सनी है but it's very chilly weather. ऐसा नहीं लग रहा है कि गर्मी लग रही है. The weather is so good. I'm just chilling. यहाँ पे पानी पी रही हूँ. बहुत मस्त लग रहा है. बहुत फैमिलीज आई हुई हैं. मैं 3 दिन के लिए आई हूँ बट 2 दिन के लिए ये एयरबीएनबी बुक किया था. मेरे को 3 दिन के लिए नहीं मिला था. सो लास्ट डे आई एम गोइंग टू मुन्नार जॉस्टल. मोस्ट प्रोबेबली वहाँ जाकर
मज़े करूँगी and I'll interact other people because hostels are usually lots of friends you can make and chill with other people, but somehow these Airbnbs and all you need to be alone since मेरे साथ कोई है नहीं, so you need to be alone and sit आराम से. But I think this is what it is needed when you travel, right? After a lot of hustle bustle in your life, everyone need pause in their life. If you are struggling with your office, personal life, your family problem, lot of things, but travel is the one which brings so calm, so peace, because all this hustle goes on. And जब से मैंने solo travel किया है, I personally love it because मेरे को लगता है it gives me boost. Once I go back, I start working. Every trip gives me a lot of learning. Every trip I learn something new. I meet some new people. I get contact to the new people. I solve some lot of good problems. Like yesterday, मेरे को scooty नहीं मिली, तो what next? I need to take a decision. So I love all those things doing by myself. But yes, obviously there are privileges, how and where you are staying, how you are traveling. Travel style of everyone is very different. So yeah, I think this pause is much required, and for my kind of a travel, I personally like very chill because I don't feel something which should be very rushy. I don't like touristic place to go. I don't do all those things because मुझे वो पसंद नहीं आता है. But it depends totally on you, like how you want to travel, how you want to enjoy your travel thing. So yeah, that's about it. I hope आपको मेरे साथ मज़ा आ रहा हो अभी तक. And आज का तो as usual simple plan है. There is not something which I'm going to do lot of things. बहुत सारी noises आ रहे हैं because there is one full family who is backside. But yeah, I'm very happy and I think so, you know, travel is the one which makes me so sane. So yeah, as I was saying, right, so basically it depends how you travel, how you want to enjoy your travel and everything. But I personally love sitting, enjoying the vibe, seeing the mountains, seeing the nature, being in the nature. This gives me so peace, so calm, because in office days and in Bangalore and everywhere, like you're working, you'll be like busy. So this brings pause in your life. So yes, so that's about it. I have missed my breakfast because it's almost late and they have completed the breakfast. I'm thinking to go somewhere out to get or buy something. कुछ मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, like idli and all. And yeah, but the Munnar is so beautiful. While I was coming through a bus, you might have seen in the starting, right? It's so good. I think I went to Kodaikanal this year, Wayanad, but Munnar is a very scenic. Like the views are so beautiful. So yeah, guys, I'll take a shower now. I'll go inside. I'll relax today. I hope I can do. Otherwise, I'm just sitting around. Say I'll blabbering. I'll giving you some lectures or a gyan. And yeah, I hope you are enjoying these kind of a travel videos. So guys, let's go and ride a scooty. Property is so good. मुझे इतनी अच्छी लग रही है, इतनी शांति है. So good. Let's ride the scooty. Let's go. View is so good, man. I'm riding the scooty. Yay! I'm super happy. क्या मस्त लग रहा है, देखो. So good. Yay! So yeah, guys. मुझे इतना मज़ा आ रहा है स्कूटी राइड करने में और ये व्यू के साथ कि मैं आपको क्या बताऊँ. मैंने मैगी वगैरह ले लिया है. अब मैगी खाऊंगी. मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है. एंड सी द व्यू, कुछ ऐसा दिख रहा है. एंड मैं ऐसे चल रही हूँ यहाँ से. थोड़ा सा बम्पी रोड है यहाँ पे. दिस मैगी मिल्की मिस्ट पैकेट एंड देन समथिंग ब्लू लेमन ड्यू. आई एम नॉट श्योर. Thanks, Anna. So yeah, just look at this view. Oh gosh, so beautiful, so amazing. If you watch the Project Hail Mary movie, it's like amaze. And see, now I'm going to ride this full steep. Yay! I'm loving this. So yeah, मैं आ गई हूँ. चलो, अब मैं बाद में मिलती हूँ. Guys, I'm making Maggi here in Airbnb. They have allowed me to cook Maggi because I wanted my Maggi in my type or in my way. So yeah, I'm cooking it here. They have given me these spoons and everything. They're so cute, man. About this Maggi, cooking here, enjoying the view. It's a evening time. ना अच्छा bright लग रहा है और बहुत ही मस्त vibe हो रहा है because outside it's raining. So if you see, it's like almost 6:45, and here I am, like long mirror, sitting outside, enjoying the vibe that's there. And this chandelier kind of a thing is looking so good.
It's like a bed situation is messy, ignore it. And then I have bought something, I told you, right? I bought this biscuit, Maggie I ate, and then so good. So let me show you outside how the balcony view is. Everything is lit up and it is looking so good, and it's raining. If you see, so good, so good. And see all those houses, lights and everything. I really love this property, so good. Let me show you, go outside and I'll show you. They have a lot of other things. I showed you in the morning, right? Yahan pe they have this volleyball ka thing, and then you can aram se relax there as well. That is a kitchen where people are cooking. And then if I go from here, it's like an entrance of my tree house. See, it's looking so good. Yeah, just look at this. Property is so good, man. Just look at this. Everything is just lit up and so good. So this is my entrance. Something is there. See, something is written. I don't know, maybe a tree house, but yep. So yeah, let's go inside. I can see some different properties are also there. So good, so peaceful. Something is there in this property which is so calming. Some music has been played far away. I'm not sure you can hear, but yeah. So yeah, guys, I hope you are enjoying the vlog. अभी शाम में जो weather हो रखा है ना, it's so good. Windy हो रखा है and it's raining. Raining meaning बहुत ज़्यादा heavy rain is not there. It's like drizzling, and this is a yellow light. I love yellow light. So quickly, let me give a cost and everything. कितना पड़ा मेरे को? So almost 6,000 पड़ा for 2 days, and if you ask me, it is worth it. So 100,000% it's worth it. You should definitely book if you are in Kantaloor. Maybe if Vatavada, if you search, you will find this place. Oh, chapati or rice? It was ghee rice, right? Okay. Hello. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. So guys, you have seen कि मैंने चेकआउट करने के बाद मैं टूवर्ड्स मुन्नार आ रही थी एंड अराउंड 3:30 o'clock temperature was so good, the weather was so good.
तो यहाँ पे मैं आराम से व्यू को एंजॉय करते हुए ये सेकंड पिट स्टॉप लिया है आफ्टर कोकोनट वाटर, जहाँ पे मैं यहाँ पे चाय पीने वाली हूँ। एंड द वेदर यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, इफ़ यू विल गो देन ओनली यू कैन फील इट। बहुत ही सुंदर था। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं इंजॉय करके यहाँ पे चाय बाज़ार, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कांतलूर डू ट्राई इट। यहाँ पे बहुत सारे टीज़ और ये सारी चीज़ें मिल रही थी। डेफिनेटली यू कैन ट्राई एंड बाय। रिपल टी इज़ लाइक द फेमस ब्रांड, इट्स लाइक अ चेन, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ बनाना केक के साथ। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड माई ट्रैवल एंड ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया था। और फिर उसके बाद इतना खूबसूरत व्यू था ना कि हर स्टॉप पे मन कर रहा था रुकूं, वहीं पे रहूं और सारे घंटे यहीं पे बिताऊं। बट अनफॉर्चुनेटली आई नीड टू गो सून टू मुन्नार बिकॉज रात होते जा रहा था। बट आई स्टॉप लॉट ऑफ प्लेसेस एंड एन्जॉयड लिटरली एवरीथिंग हियर। हाय गाइस, सो मैं आ गई हूँ जॉस्टल, चेक इन कर लिया है। ये वीडियो बाय द वे 3 o'clock का है क्योंकि जब मैंने चेक इन किया द वाइब वॉज ओके। मुन्नार जॉस्टल मुझे उतना भी पसंद नहीं आया। आई वुड नॉट रिकमेंड, बट आई एम नॉट श्योर, मे बी जब मैं गई तो क्राउड वॉज नॉट गुड एट ऑल। रात में कुछ लोग इतना ज़्यादा लड़ाई करने लगे थे कि मेरी नींद कंप्लीट ही नहीं हुई। आई वॉज सिटिंग हेयर बट यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ पूरे वाइब को। एंड birds were chirping, the morning was looking very good, at least मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, which is okay and fine. And I did not like lot of people because पता नहीं मेरा vibe किसी के साथ मैच भी नहीं किया यहाँ पर। तो मैं आराम से अपना टाइम अकेले बिता रही थी। and that's what travel is all about. Sometime it is good, sometime it is not so good, it doesn't happen how you want. तो मैं अपना अकेले यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ नेचर के बीच में रह के, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड ये ऑलमोस्ट सुबह 5 बज चुका है। मैं पूरी रात नहीं सो पाई सही से। मैं गर्ल डॉर्मेट्री में थी तो मैं भी आपको लेके जा रही हूँ। तो आई टुक द स्टेयरकेस। अच्छा प्रॉपर्टी है आई वुड से, बट पता नहीं मेरे को उतना पसंद नहीं आया। एंड दिस इज़ हाउ लॉट ऑफ डॉर्मेट्री आर देयर। ये फर्स्ट वाला जो है ये फीमेल डॉर्मेट्री है। लेट मी गो इनसाइड एंड शो यू। सारे लोग सो रहे हैं तो मैं चुपचाप अंदर जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि सारे लोग सो रहे थे। 5 बज चुका था। अराउंड 6 o'clock आई अगेन केम बैक। आराम से आई एम जस्ट सिटिंग हियर इन दिस प्लेस एंड चिलिंग, कुछ और कर नहीं रही थी। उसके बाद आई मेड सम गुड लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ जस्ट टू शो यू, इंस्टाग्राम वीडियोज़, क्योंकि नेचर के बीच में रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दैट्स व्हाट ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट आई इवन वांटेड टू डू एंड एन्जॉय दैट। सो दैट्स व्हाट आई डिड। दिस इज़ गाइस जॉस्टल का किचन एरिया। मैं कोल्ड ड्रिंक्स ले रही हूँ अक्का से। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आज मैं यहीं पे ही बैठ के खाया है, यहीं पे मैंने बैठ के खाया है खाना। इतना समर हो रखा है यहाँ पे, देखो इतना वाइब जो है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब इतना सनी में कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू एंड योर ट्रिप। Sprite 9 and 7 Up 9. 7 चलेगा। कितना हुआ? अच्छा ठीक है, बाद में कर लेगा। ओके थैंक यू। मैंने ये 7 Up लिया है, मन कर रहा है मेरे को पीने का। सो लेट्स गो एंड ड्रिंक 7 Up। हाय यू गाइस, वेलकम फ्रॉम मुन्नार। सो मैं अभी मुन्नार के जॉस्टल में हूँ। सो मैं कांतलूर से आ गई थी। मैं जॉस्टल में आके पूरा आई टुक अ गुड नैप एंड देन उसके बाद आज मैं रेडी हुई हूँ एंड आई हैव माई बस फ्रॉम मुन्नार टू बैंगलोर। बट आज मुन्नार में कुछ भी करने को मन नहीं है, इसलिए बिकॉज फर्स्ट इट्स सो मच रश, कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिंस संडे। एंड आई एम जस्ट चिलिंग एंड रिलैक्सिंग क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सनी हो रखा है। इट्स सो सनी, यू कैन नॉट ट्रैवल इफ़ यू डोंट हैव योर कार और अ स्कूटी। सो आई एम नॉट टेकिंग दैट एंड देन या आई एम जस्ट सिटिंग आराम से चिलिंग। लॉट ऑफ साउंड्स आर देयर एट द बैक एंड। पता नहीं 3 दिन से यहाँ पे क्या फेस्टिवल चल रहा है, बट इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि कुछ भी शांति नहीं है। आई वॉज इन कांतलूर, यू माइट हैव सीन कांतलूर ट्रिप वॉज सो गुड। मैं बहुत सारे प्लेसेस में खाने के लिए गई। इट वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एंड अ कूल प्लेस टू विजिट इफ़ यू वांट। एंड देन वहाँ से मैं आ गई मुन्नार में। इफ़ यू डोंट नो, यहाँ से 40 किलोमीटर है। सो ईजिली मेरे को 3-4 आवर्स लगा फ्रॉम कमिंग देयर, बट नो इंटरनेट, ओनली जियो एंड BSNL वर्क्स। सो बी कॉशियस इफ़ यू आर कमिंग। अगर आपके पास ये 2 सिम है, इट विल वर्क। For me it was not working because I had my Airtel and peace trip because I don't want it to be like getting calls from a lot of people, so I was just relaxing. शाम में मेरी बस है आज। You tell me आपको ये ट्रिप कैसा लगा? आप मुन्नार में हो तो prefer to have a hostel more than a hostel. You can go to Monkey Tribe. Some suggestion came to me, it's so good, you can definitely try. But वहाँ पे seats available नहीं थे तो unfortunately I need to book this. So yep, मैं check out कर लिया, मैं fresh up हो गई and I'm making some good videos for my Instagram and all. And उसके बाद यही plan है कि I will
I'll have some food. यहाँ पे मैंने खाया आज डोसा and omelette breakfast में, and उसके बाद I'm planning to have like दिन में they have lunch दाल और चावल, दाल और rice is there, so I'm thinking to have that with some protein. And that's it. At 4:30ish around I'll go, I'll have some coffee or tea somewhere, like if the vibe is good, because मुन्नार में एक चीज़ बहुत ही अच्छा होता है, around 3:34 के around ना weather बहुत ही change हो जाता है, like mist, drizzling, and the weather is perfect, weather is weathering kind of a situation happens. So I think I'll go have coffee, and from there directly I'll go to my bus stand. That's a plan. I hope you are with me. I hope आपको ये vlog बहुत ही पसंद आया. अगर पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. मैं तो अभी फ़िलहाल ऐसे बैठी हुई हूँ यहाँ पर एंड जस्ट टॉकिंग टू यू ऑल. आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा मेरा ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि मुझे अभी ट्रैवल व्लॉग ही करना पसंद आता है एंड आई फील इट्स गुड. आई एक्चुअली मैं जो रॉ हूँ वही दिखती हूँ, जैसे मज़ा करती हूँ. सो येस, that's it. I think Kanthalur was so good, so perfect. It's like 100 out of 100, I would say. By the way, ये bonfire area, these people also have some private rooms. Let me show you. So yeah, I think this is the private room, this is the reception, and that's an entrance. It's Chotu Hostel, but it's still in forest area. So if you see, this is how it looks, and this is obviously a bonfire which will basically शाम में या रात में bonfire करते होंगे ये लोग. And then yeah, this is how my view is. I'm talking to you in front of all these beautiful view. I would definitely say guys to you, please travel, make thinking, and you can put your thoughts, you can spend your time with yourself. ये bird का chopping सुनाई दे रहा होगा, like टर because ये forest है. You will go to nature, you'll understand वो ज़िंदगी का जितना हसल बसल ज़िंदगी चल रहा है ना, उसमें pause हो जाता है. And मुझे लगता है अगर आप single हो, whether boy or a girl, you should definitely do it, because travel makes everyone happy, I always say. And so you know what will happen during traveling, you will see waterfall, nature, meet local people. जब से मैं रिजॉर्ट और एयरबीएनबी में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहने लगी हूँ, आई लिटरली लव होम स्टे बिकॉज इट्स सो गुड एंड इट्स सो परफेक्ट. एंड ये जो सन आ रहा है मेरे फेस पे इतना अच्छा लग रहा है ना. The second part is, if you're staying in good hostel, you'll make a lot of good friends, you'll meet new people, and once you meet new people, you learn a lot of things. So I made a lot of good, very very good friends out of my solo trip, and I personally think that that's the best way for my kind of a people who are very introvert and don't talk to a lot of people. You get opportunity to talk to people, you go and mingle with other people, you travel with them, understand people, lot of things you do. And आप अपने इस शादी and marriage के झंझट में नहीं हो, and if you're single, definitely I'm telling you, go for it. Pack your bag, go at least for a day, spend a day there. If you don't feel good, come back, but give a chance to yourself and definitely do it. I believe मैंने अच्छा किया, मैं सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया and I'm at very good peace, because जब भी मैं ट्रैवल करने के लिए जाती हूँ, that gives me so much शांति, that gives me so much peace. It brings all the adrenaline rush, all together it makes me happy. Yeah, but at the end we need to go back to work to earn money and then start our day like normal. But travel always make you refuel and start working on yourself. Sun ka rays jo reflection aa raha hai, it's looking so good, ekdam perfect aa raha hai. So yeah, if you like this video, like, share, subscribe karna bilkul bhi mat bhulna. Maybe once I'll be in Bangalore, I'll see you there. If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. So beautiful. This feels like time is making fun of me. Away at the walls and I can barely breathe. Guys, Munnar trip is almost getting over. I have taken some food to eat
And now I'm leaving for my bus. It's 500 almost walking distance. So let's go. Food is packed. Let me see if I can have some cold drinks. And then this was like a place from where I took this food. Birthless Greek Cafe.